my duty, my honor, my privilege to welcome him on stage. Right, so let me introduce the legend, known for his calm under pressure, a captain who found glory whenever he led his troops, the only captain in history to win 3 ICC trophies and claim 5 IPL titles, leading Chennai Super Kings to become the most successful IPL team in history. He took Team India to the top of test rankings for the very first time in 2009. A keeper who holds the record for the fastest stumping in the history of the game. A recipient of Padma Bhushan, Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratna awards. Ladies and gentlemen, please put your hands together and make some noise for the one and only who has made an entire nation proud. The Captain Cool, the Lieutenant Colonel, and our very own Mahi. Give it up, give it up, give it up for Mahendra Singh Dhoni. Welcome this evening, sir. So everybody was waiting for you to come here. How are you feeling, sir? How are you feeling? Welcome to this show, sir. I am having goosebumps, I'm having shivers. My God. He's here. A very good evening. I wish मेरे में भी इतनी energy होती, you know, so, but it's good to be back. Last time जब हमने event किया था, it was a lot of fun. So benchmark थोड़ा ऊपर है. I'm just hoping that today's evening also is hopefully a lot of fun. And Goa is slightly laid back, so automatically energy level थोड़ा नीचे आ जाता है, you know. So good to be here. You know, it's last few days have been quite nice, quite relaxed. So hopefully the evening will be, you know, very good. So thank you so much for being here. Once again, please put your hands together for my bhai guy. Come on, come on, come on, people. And I request everybody to please settle down. I request Mr. Swapnil Saurabh sir to please do the honors and present a token of love and appreciation to our very own, the face of RIGI. Right, he's ours. He has given us his time. We are absolutely glad. Thank you so much, sir. Thank you so much for doing the honors. Now, it's time for the next segment. Yo, yo, yo. Welcome to this segment, guys. The OG gang is here with us. The legend, our very own MSD sir is here with us. He has already joined us. Let's welcome everybody, the rest of the panel. So, अगर आपको ये lines थोड़ी सी वाकिफ लग रही हैं, so you must have understood मैं किनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, right? Ladies and gentlemen, get ready to meet the man who's made us all laugh, even when the screen was buffering. From co-founding AIB, delivering countless laughs to ruling YouTube with his humor and charm, he's done it all, and he knows exactly what his viewers want. Please welcome the king of punchlines, the OG of content creation, Tanmay Bhat. Yes, yes, he's here, and don't worry, he has promised that he won't be roasting anybody. I think still, I don't know. Welcome. Okay, so joining him on the panel, ladies and gentlemen, up next is someone who's even cooler than his nickname, Kullu. From playing it on YouTube to owning the stage with his comedy, he's been turning everyday moments into hilarious stories. A member of Tanmay's OG gang. Let's give it up. Put your hands together for Aaditya Kulshreshth, aka our very own Kullu. Welcome, bhai. All good, bhai. Kaise hain aap? And joining them on the panel, the beauty with brains. Alright, fam, keep that energy going. Next up, we have a true storytelling visionary who transformed simple street moments into powerful narratives. Through Humans of Bombay, she's created a platform that's inspired, connected, and touched hearts across the nation. Ladies and gentlemen, let's welcome the queen of stories, Karishma Mehta! Guys, energy thodi kam hogi. Guys, I need more energy, otherwise they won't be speaking, they won't be talking. I'll say 3 to 1. Cheer the loudest. Clap the hardest. Let's do it in 3, 2, 1. Thank you so much. Check. भाई इनके लिए भी एक बार ताली बजा दो प्लीज प्लीज
मतलब ऐसा इंट्रो लिखा है कि पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी था, मतलब सबके लिए. Thank you very much. My boy, how are you doing? Well, surviving, getting old. You're definitely not getting old. Huh? How many of you think he's getting? He looks younger every year, no? हमने इस बार का सीजन देखा सर. एक बॉडी में ऐसी ऐसी जगह रोज दर्द होती है ना. अच्छा यहाँ भी दर्द हो सकती है. Then you realize अच्छा कल ऐसा किया था तो उसके कारण. Other than that, God has been kind. But can I ask you one thing? Last time उन्होंने कम पेमेंट दिया था क्या? Last time? Did they give you less payment last time? इस बार आधा तन्मय आया था. पिछली बार पूरा तन्मय आया था. No, but congratulations. You have lost a lot of weight. Thank you, my boy. Keep Appreciate it. So let's just begin. हाँ बिल्कुल. My boy, पहला सवाल जो मेरे को बहुत टाइम से जानना था, जब से हम वर्ल्ड कप जीते तब से मुझे जानना था, ठीक है? तो आपने भी इस बार का T20 वर्ल्ड कप आप भी देख रहे थे. कहाँ देख रहे थे आप, और क्या आपने भी हमारी तरह 15th ओवर में टीवी बंद कर दिया था? नहीं, हम लोग घर पे थे. We were watching. Some of my friends were over. So of course second innings जैसे चलने लगी, so ज़्यादातर दोस्त बाहर चले गए. I was the only one sitting, doing in and out. Like, अरे खत्म हो गया, चलो ना हमारे साथ. I'm like, in cricket जब तक वो खत्म नहीं होता है ना, it's not over. None of them believed. Even I was questioning it in the sense, you want the team to win, but अंदर वो होता ही है कि यार अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए. And one of the things that I firmly believed was, उनके जो बैट्समैन थे, they were slightly light on the batting order. And हमने ऐसा देखा है कि क्रिकेट में जब प्रेशर जोर का पड़ता है तो कुछ भी हो सकता है. So there was a time when they were firmly cruising, but when the stakes are high, when it's very crucial, when the games are big, you get a chance and you want to make the most of it. So I feel we were able to do that, and that's why we won the trophy. And big congratulations to the guys who are on the field, because that's the kind of energy, motivation and belief that is needed. That doesn't matter whatever the result may be, but till they don't win and it is not called that they have won the game, we need to keep pushing, and that was the attitude. आप जब अभी मैच देखते हो तो आपके अंदर का कैप्टन अभी भी चिल्लाता नहीं है कि कौन रखता है लॉन्ग ऑफ, यार भाई मिड ऑफ लेके आओ, यार स्पिनर को क्यों डाल रहे हो अभी? Like, does the captain keep talking in your head? No, for a simple reason. When you are inside on the field, you get a lot of vibes, so your chances of absorbing what is happening is much more. So I don't think all of that, but like a spectator, my heart rate goes up. And the one thing I've realized is, one, I'm actually playing on the field, my heart rate is more controlled. But when I'm outside watching the game, it actually behaves like a fan. Okay, I may read the game better, but the heart rate is, it's going through the roof. Yeah. Maybe it's simple that, I want a certain result, and the result is like you want to win every time. So because we want that result, that the heart rate goes through the roof. I think that's shocking, because every time you're actually on the field, and I'm a huge cricket follower, I've followed everything. So when you're on the field, it seems like you're almost calculating an IPL, right? So how are you keeping it cool on and off? Like, how's the balance for you? When I'm off in the sense, I don't think a lot about cricket. I'm only playing IPL as of now, so it's slightly tough in the sense I have to keep myself fit for 9 months so that I can play 2.5 months of IPL. So you need to plan it out, but at the same time, chill a bit. I've played international cricket for quite long, so you want to spend time with your family, with your parents. I have a lot of pets, so get a chance to play with them. So I've kept it very simple. I'll train for 15-20 days, 25 days, then I take off for 15-20 days. So it really helps me be in the groove. I can enjoy the food that I want to eat. Once I start training, I follow a good diet. I won't say an excellent diet. So that's what keeps me busy. And in between, we have a few endorsement works and everything. So that helps. And I've been watching a lot of cricket. When I was playing, I used to watch less, but now that I'm not playing international cricket, every time there's a game going on, and I love to sit and watch, unless the result is decided. A lot of times in T20 and 50 overs, what we have seen is, right after the 10th, 12th over, what are the chances of happening, in the game. So other than that, I've been a keen watcher. What's a day in the life of Mahendra Singh Dhoni today? When you're not playing, like, what do you do?
Well, the schedule is slightly different. Different depends on where I am. So let's say if I'm in Mumbai for endorsement work and all, then what dictates is what time they are calling me on the set. So according to that, I set up. So when I'm in Ranchi, it's the schedule is quite fixed in the sense I'll get up slightly late because I sleep late. I get up slightly late. Have my breakfast, then straight away go to the stadium, do my gym or whatever I want to do. Then come back, spend some time with the family, play with the pets, and evening if I feel like I'll go again to the stadium, play a bit of badminton or tennis, some of the other sports. And in between we have a farming area, so on and off, I go over there. So it's quite regimented in the sense it's almost the same schedule every day. It is quite boring. But other than that, I've not been doing much. In between, bike rides and all, but not for long. The tractor reel went viral very recently where people are like, oh my god, he's also farming. You can do everything. But whenever I go back, I have to take lessons in the sense, in a tractor, and especially with all the accessories, how to move and all, because if you're not regular, you tend to forget, what needs to be done. But once in the sense, once you know how it is done, then whenever you go back, they just orient you and you're like, okay, I can do that. But it's tough, sometimes I've bitten more than I can chew. But it's fun, farming is fun. ठीक है, आईपीएल के बारे में दो सेकंड बात करें. हाँ सर, इस बार आप पता नहीं क्या चीट कोड लगा के आए थे, हर बॉल में 6 मारते थे और लाइक फर्स्ट टाइम यू आर नॉट कैप्टन दिस ईयर. और आपको अजीब लगता था जब डीआरएस के टाइम अंपायर आपको देखता था अभी भी? They would expect you to take the DRS. नहीं, being a keeper, captain always consults the wicket keeper. Reason simple होता है क्योंकि from behind the stump you know where the ball has pitched more often than not, unless you are blinded by the batsman in front. And more often than not, most of the captains, they don't trust the bowler because their expression is the same. out है, ले लो, एकदम खत्म है, मतलब बैट्समैन को वापस जाना ही है. And then you realize it was not even close. आपके टाइम पे कौन बोलता था कि ये नहीं है? कौन नहीं बोलता? मतलब sometimes T20 में एक reviews भी होते थे, only one review. Everybody is asking for it, so you have to be very careful. And you want to give that liberty to the bowler, but then I realize, हर कोई बोलता है कि आउट ही है, and हर बार decision हमारे favor में नहीं होता. So a few times, we put the ball in the bowler's court. यार अपने जान का बाजी लगा कि ये review लेगा, most time नहीं लेते, next time देखते हैं. So I only said that if you think it is out, it should at least be an umpire's call. It can't be like you think it's hitting the middle stump and it ends up hitting nowhere. It has pitched outside and going outside, so that is wrong. So if you're not sure, give whatever your feedback is, because keeper also from behind, at times we don't know where exact the impact is. And at times we don't know where the ball has pitched. But being a bowler from front, should be able to analyze that, what was the height of the ball and all. So if we share the responsibility, decision making becomes easy. आपसे तो अपोजिट टीम वाले भी पूछ रहे थे. नहीं, मैं दूसरे तरफ घूम जाता हूँ ऐसे नहीं. मेरे बैट्समैन का ही रिव्यू ले ले, पता चला आउट हो गया. भाई ये तो आपको भी रियलाइज हो गया होगा व्हेन यू कम आउट टू बैट, राइट? मतलब ओटीटी के इंजीनियर्स घबरा जाते हैं कि आज ये वॉचिंग हम लोड ले पाएंगे कि नहीं. वॉचिंग 3x हो जाती है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है. ये पहली बार हो रहा है कि आपके पहले जो बैटिंग करने आता है उनके आउट होने की लोग दुआ कर रहे हैं. तो आप हिंट लेके आप मतलब 2 डाउन ही आया करो ना, ताकि और बॉल मिले हमें. फिर मेरे ऊपर प्रेशर बन जाएगा ना. डिमांड और सप्लाई का गेम है. सो हमने बहुत सिंपल रखा है यार. अगर मैं इफ अदर्स आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल, व्हाई डू आई नीड टू गो अप द ऑर्डर. जैसे लास्ट ईयर की अगर आप बात करो तो T20 का टीम अनाउंस होना था वर्ल्ड कप का. सो यू हैव टू give people a chance who are fighting for that spot. हमारे टीम में we had a few, Jadeja was there, Shivam Dube was there. So unless you give them opportunity, they need to prove themselves and then get into the Indian cricket team. मेरा क्या था, मेरा selection हो नहीं सकता था. So I was like, I'm good behind. I'm happy with what I'm doing. My team is happy with what I was doing. So it was a lot of fun, and I just want to enjoy whatever last few years of cricket, I'm able to play. So वो जो बचपन में नहीं होता था 4 बजे हम लोग खेलने के लिए जाते थे, wanted to enjoy the game. But when you play professional sport, it becomes difficult to enjoy the game just like a game. So that's what I want to do. But as I said, it's not easy. वो emotion आ ही जाते हैं, वो थोड़ा commitment आ ही जाता है. But I want to enjoy the game, for the next few years.
this. वो एंजॉय करने के चक्कर में जो हार्दिक भाई को 3 छक्के पड़े, 3 छक्के मार दिए आपने। उनका सीजन वैसे भी ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा था और आपने ऐसे बीच के छक्के मारे। इट्स पार्ट एंड पार्सल यार, कभी आप आउट होते हो, कभी आप रन बनाते हो, जो भी टीम को चाहिए उस समय, व्हाटएवर द सिचुएशन डिमांड्स, आप कोशिश करते हो। अब कई बार बॉलर अनफॉर्चुनेट होता है, कई बार हम लोग बैट्समैन अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं, सो इट्स पार्ट एंड पार्सल। कई बार जीतेंगे, कई बार हारेंगे, बट टिल इट्स फन, यू नो, played in the right spirit and with the right competition in mind, then why not? Love you, MS. बीच में निकला। एक इंटरव्यू देख रहे थे मैं और कुल्लू, दीपक चहर जी का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया कि कभी माही भाई से डांट पड़ी है कि नहीं, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था जहाँ पे आपने उनको स्पेसिफिकली कहा था कि दीपक भाई नकल बॉल मत डालो, फिर उन्होंने नकल बॉल ही डाली और फिर जैसे कि तैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा बहुत आपके अंदाज में उन्हें डांटा, पर उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगा। और एक काफी प्लेयर्स कहते हैं कि भाई भाई से डांट पड़ने के बाद बुरा नहीं लगता है, तो हमें टिप्पणी चाहिए थी कि अगर किसी को डांटना हो सबसे अच्छा तरीका क्या है डांटने का, ताकि बेस्ट लेसन। सो अब दीपक ने अपना मुंह खोल ही दिया है तो मैं भी खोल देता हूं। सो ये थोड़े काफी साल पहले की बात है, एंड he has been an excellent cricketer for us, you know, जहाँ भी हमारे साथ खेला है, he has done very well, पर उसका हमेशा कंप्लेन था मेरे से, भाई आप यार मुझे डेथ में बॉलिंग नहीं कराते हो। तो बोला यार अगर 4 ओवर तू ऊपर में इतना अच्छा डाल दे रहा है, विकेट ले रहा है, यू नो, व्हाई डू यू नीड टू बॉल इन द डेथ? जो भी उसके दिमाग में होगा, तो 4 ओवर डालता था, 90% ऑफ द टाइम ही वुड बॉल 4 ओवर्स, बट नॉट इन द डेथ, हम किसी और को यूज़ करते थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ तो बॉलिंग हो रही थी, एंड ही स्वेट्स अ लॉट। मतलब स्वेट्स अ लॉट का मतलब है कि अगर खड़ा भी है ना तो पानी ही है। सो वो बॉलिंग पे था, मैंने बोला कि भाई उसको बहुत शौक होता है वेरिएशन का, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, विल कीप हिज फील्ड्स। तो मैंने उसको यही चीज़ बोला कि भाई नकल बॉल मत डालना, बिकॉज नकल बॉल इज अ बिट डिफिकल्ट। उसके बाद इफ यू आर स्वेटिंग सो मच, यू नो, देयर इज नो फ्रिक्शन, हाउ विल यू बॉल दैट टाइम? बट ही नोज एवरीथिंग। ट्राई करना ही था। हम लोग जो एक्सपीरियंस है, जो दाढ़ी वाड़ी हमने सफ़ेद की हुई है, उसको लगता है धूप से हुई है। तो ऑफकोर्स ही ट्राइड, फिर 2 बॉल वगैरह हो गया, जो भी हुआ। सो मैं गया उसके पास, आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट वर्ड्स बट आई सेड, बट मैंने उसको सिंपल चीज़ ही बोली। मैंने बोला यार तेरे तर्कश के सारे तीर मैंने थोड़े देखने हैं, मुझे पता है व्हाट यू डू, तुम्हारे पास वेरिएशंस क्या है, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो यू बोल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो टीम को चाहिए उसके हिसाब से डालना। तर्कश के तीर तो मैं देख लूंगा जब मुझे मन होगा तब। उसको थोड़े ग्रामर थे इधर उधर, बट उन्होंने बोला था कि आपने उनको बोला था कि गलत तू नहीं है, गलत मैं हूँ जो तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि इतने मजबूरी के बाद, इतना सोचने के बाद मैंने बोला ये मत डालना, उसके बावजूद उसने वही डाला। मे बी ही हैड सो मेनी अदर ऑप्शंस, यू नो, दैट ही कुड हैव ट्राइड। मैंने तो एक ही चीज़ बोला था यार कि ठीक है, ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे, उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए। बट यू नो, एट द एंड ऑफ द डे ही अंडरस्टूड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज, हम सब गलती करते हैं, बट हम उस गलती से क्या सीखते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और 2 गलतियाँ जो सेम होती हैं, उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा आप क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो। And how you said now, how to criticize people, yeah, how to tell them that what they have done is wrong. I always felt that it shouldn't be demeaning. A lot depends on the kind of relationship you have with the individual, and you know, you want to say stuff that helps the individual become better. You know what I've realized with the cricket team or us, you know, as Hindustani, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत ख़राब लग जाता है। बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट, आप 2-4 ग्रामर के साथ भी कुछ बोल दो ना, इट डजंट फील बैड। सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला, सो ही हैजंट लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, इट्स जस्ट दैट, यू नो, मुझे ख़राब लग गया, सबके सामने बोल दिया। सो इफ़ यू नो द इंडिविजुअल, यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट वे to work with him or her and get the best out of it. At the end of the day, if you're leading people, you know, you want to get the best out of them. Whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, यस, अगले दिन लोगों को डांट रहे बाथरूम लेके जाके कि माई ने कहा था कि लैट्रिन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही 11 बार बोल रहे हैं।
बाथरूम में एक चीज ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा, देयर इज नो एविडेंस. ठीक, लड़को. So, your stump mic conversations are hilarious. जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था was very very funny. तो किसके साथ सबसे ज़्यादा banter है टीम में? It's not targeted banter. You know, जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है, depending on that, you know, you try to say whatever. It turns out to be funny. ऐसे डालना है तो रख ले. So stuff like that, you know. You said girlfriend नहीं है वहाँ पे. एक चक्का लगा के दिखा. That is generally for people. जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा almost 80% of cricket happens right in the middle. तो स्पेशली जो फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं या 30 यार्ड पे होते हैं ना, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट दे लुक बिहाइंड इन द क्राउड. नो, पहले तो 30,000 40,000 लोग हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एनीवन फ्रॉम दैट डिस्टेंस. आपका एक कैप्टन होता है, एक बॉलर होता है. सो जनरली ऑन द फील्ड दीज आर द 2 people who are in charge. अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो 3 इंचार्ज हो जाते हैं. अगर एक कैप्टन हुआ, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर. इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में, तो वो आपको will try to take your attention. But अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है. But I never understood, they always look the other way. So that's the time when you say कि उधर कौन है भाई, हमें भी बता दो. You know, I'm not able to see who's there. कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी. मिसबाह उल हक ने जो स्टोरी बताई थी, प्लीज आप ऑडियंस को बताना और भाई को सवाल पूछ लेना. तो मिसबाह उल हक ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज़्यादा रन मारे थे, और उन्होंने अपनी टीम को जो है बताया होता कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको ज़रा ध्यान से खेलना. फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे. फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे. तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी जब आप फर्स्ट टाइम वो? स्टोरी नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था वो. सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है. तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई, हैडेंट स्कोर्ड. सो उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माई फर्स्ट सेंचुरी. सो दे सेड कि ऐसा मारता है. नहीं, तो आप जब अगली साइड में गए थे, अंडर 19 इंडिया ए में गए थे, तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना खौफ कैसे बना लिया? टूर. सो हम लोग कीनिया गए हुए थे. सो इट वाज अ ट्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था. जो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए एंड कीनिया की टीम थी. सो दैट वाज द टूर एंड आई गॉट अ चांस टू ओपन. You know, Dinesh was also part of the team. Dinesh Karthik, he got selected for the Indian cricket team. So वो चला गया and then I got an opportunity to play for India A and I was batting top of the order. You know, open में कर रहा था, one down खेल रहा था. So I got an opportunity and you know it was a lot of fun. The condition was slightly challenging, but also when you get a chance like that, you want to make the most of it. You know, and Pakistan was a good side. You know, Kenya की उनकी जो top international side थी, that was playing, but Pakistan की A team थी, so a lot of cricketers who played with me later on, you know, they were also part of the squad. So it was fun, as I would say, but at the same time, you know, after that tournament, I was sure that I'll get a chance to play for India. अब 3 महीने के बाद चांस मिले, 10 महीने के बाद चांस मिले, but I knew that I'll get a chance to play for India. So that was a breakthrough tour for me. वो बोल रहे थे गेंद वापस ही नहीं आती जब आप मार रहे. इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार. इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स देखते हैं. माही भाई, आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चले जाता हूं. अपने बारे में क्यों देखना यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है. व्हाई डू यू वांट टू सी इट? एंड आई एम नॉट समबडी हु गेट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड रीड कमेंट्स एंड ऑल. सो अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, आपने पोस्ट किया, बस दैट्स इट. डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज द पीपल सिटिंग यू नो टू हैव फन at whose expense, they don't really care. So they may say something, you know, that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is, and I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly, you know, I complain about also one thing. So you know, I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, you know, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music?
I would want to hear the exhaust of a motorcycle, you know, the revving of a motorcycle. And imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, you know, there's no exhaust note here, it's something else. But yeah, you know, to keep a track of the Instagram, thoda news channel ki tarah bhi ho gaya, but you cannot trust everything. They'll put a picture and they'll write something and you know, acha aisa bhi hota hai, but you know, you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. अभी तो ऑप्शंस के टाइम पता नहीं कौन-कौन कहाँ जा रहा है इंस्टाग्राम के हिसाब से. नहीं, अच्छा वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, जिसको जो प्लेयर चाहिए, you know, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. Nobody knows. Like once people come into the auction, you don't know where you're going. And the best part is the fans. They are always like, ये auction में आ रहा है, अब ये इस टीम पे जाएगा. You are into the market. You know, whoever has the money to buy you, you know, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction. You know, it's not a trade that you know कि A player is getting traded to B franchise. You can go anywhere. Auction is 7 letters. Thala for a reason. आपको भाई ये thala for a reason meme आपको पता है क्या है और ये क्यों है और ये मुझे पता है, but I don't know the reason behind it. I don't know if it's funny or it is supposed to pull my leg or it's a banter, it's a meme, whatever it is. But I think my fans have turned it into something that's in my favor. You know, that's what I feel. Correct. And I've got brilliant fans. That's what I would say. You know, I don't need to open my mouth or say anything. You know, they are the ones. If they feel somebody has been nasty to me, they take care of it. So I'm just keeping quiet. I enjoy my life. You know, I try to play good cricket, and that's what it is for me. No, it's not trolling. I think thala for a reason is Thala for a reason is for respect. good. Yeah, वैसा है. बट बाइक्स की बात हुई थी, एक मिनट बाइक की बात हुई थी, तो आप अगर आप अपनी एक बाइक निकालो तो कितने महीने बाद आपको रिपीट करनी पड़ेगी? ये बाइक्स बहुत है, बट सब चलने की स्थिति में नहीं है. सिर्फ बॉडी बहुत है. Like I have over 100 bikes, but not all of them are in running condition. So you know, जब कोविड हुआ था तो I got a chance to spend a lot of time with the bikes. So जो मुझे पसंद थे, जिसके बारे में मुझे knowledge था, you know, so they're like 25-30 of them, you know, I got them back into running condition. And then उस समय deliveries वगैरह नहीं हो रही थी, but later on when the deliveries started, you know, I said ठीक है यार, इंजन तो अब काम कर रहा है, now make the cosmetic changes. So I did a lot of them. So if I'm right now, I'll be riding maybe 35 bikes, you know. I can easily do that. Then there are a few vintage ones where the brake is on the other side, और vintage थोड़ा एक्सपीरियंस खराब रहा है, काफ़ी बार धक्के देने पड़े हैं. So थोड़ा डर लगता है कि रोड में कहीं अगर खराब हो गई ना तो what to do. So the bikes that I trust, I know that you know they won't left me stranded. Otherwise, I take it for a ride. Vintage is also 7 letters. Just say thala for a reason. बाइक हो या प्लेयर, आप काम निकलवा ही लेते हो कुछ ना कुछ करके. भाई ये बेसबॉल का क्या ख्याल है? ये चल रहा है अभी, जो आप पहले करते थे अब ये लोग करने लगे. Yeah, you can give cricket any term that you want to. What we have seen is cricket has evolved. The way people are playing cricket is very different. You know, जब बहुत पहले जब वनडे आया था तो something was considered a safe score. अब वो बोलते हैं यार ये तो 20 ओवर में भी safe नहीं है. So you know, when you give something a term, it becomes much more interesting because you start talking about it, you start relating to it. But at the end of the day, what is it? It's a way to play cricket. Some people want to play aggressive cricket. You know, some people want to play authentic cricket. A lot of that depends on the kind of team you have got, whether they can change the way they play that cricket. You know, it's something that is very important. Not if there's something that can be done, not everyone can do it. You know, like let's say somebody like a Bumrah, he can bowl 6 Yorkers. Imagine somebody who's not able to do that. If you still ask him, he may improve over a period of time, but he may end up giving a lot of runs till that point. So what is important is to realize the strength of your team, and according to the strength of the team, you decide which is the way you want to play cricket. Maybe you want to change the way you play cricket, but it takes time. It doesn't happen that overnight you decide, अच्छा कल से हम ऐसा करेंगे. It doesn't happen. So you need to give time to individuals because they have played maybe 10, 12, 15 years of cricket since they started, and they have a certain way of playing cricket. You know, so you need to give them that time to change the way they play their cricket. Okay, you got something? I'll आजकल हम देख रहे थे अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच था जहाँ पे वी प्लेड आर वर्जन ऑफ व्हाटएवर वी कॉल बेसबॉल
पर माई भाई ऐसा भी एक जमाना होगा जहाँ पे पुराने जमाने में जब टेस्ट मैच जब चलता था, 4 दिन बैटिंग, 4 दिन एक टीम बैटिंग करी है. डू यू रिमेंबर एनी टेस्ट मैच वेयर यू फेल्ट लाइक कि भाई डिक्लेयर कर दे